वेलकम बैक। सुबह से आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक फ्लाइंग सूट पहना हुआ है और ये इस तरीके से खुलता है ये फ्लाइंग सूट। और आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोस में पहाड़ों से लोग छलांग लगाते हैं और अब यही कारनामा मैं सर अंजाम देने वाला हूँ। मैं भी इस फ्लाइंग सूट को पहनकर छलांग लगाऊंगा। शिफा, आपको बस अल्लाह हाफिज। अब मैं वापस आऊं या ना आऊं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये एडवेंचर पूरा करूंगा। ये मुल्क क्या करेगा मेरे बगैर? ये मुल्क वाकई परेशान होंगे ये सारे लोग, लेकिन बस अब मैंने सोच लिया है कि अब मैंने ये एडवेंचर करना है। तो अगर आपकी इजाजत है तो मैं छलांग लगा दूं। चले, अल्लाह हाफिज। फिर बिस्मिल्लाह, शुरू कर रहा हूं मैं। ये देख लें मेरा जबरदस्त सूट। 1 2 थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे। मेरा दिल डर रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आप ना करें और हम एक काम कर सकते हैं, हम आपको बाकायदा तौर पे हम इसकी ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। आप तो वैसे भी ट्रेंड भी नहीं है, ये ना हो कि आपके घर वाले मुझे पकड़ने के शिफा ने काम कैसे हो किया। या ना हो, मैंने छलांग लगाने का फैसला कर लिया है। बस ये देखो, ये सूट पहन लिया है मैंने, अब सिर्फ और सिर्फ छलांग होगी, बस तय कर लिया है मैंने। सिर्फ आपकी इजाजत की जो है जरूरत है बस। देखें, इजाजत मैं तो दे दूंगी, लेकिन आई एम नॉट द ऑफिशियल गार्डियन ऑफ योर्स ना। मतलब वो तो फिर आपके घर वाले, आपके बच्चे, बेगम, वालिदैन सब मुझे आके पकड़ेंगे, मैं कैसे जवाब दूंगी उनका? बिल्कुल आप उनको जवाब दीजिएगा, लेकिन बस मैं इस वक्त फुल मूड में हूँ। इजाजत हो या ना हो, शुरू कर लूं? 1 चले 2 3। ऑल द बेस्ट। बहुत ऊंची छलांग है ये। 1 2 3 ये। ओहो, वाकई पहुंच गया भाई नीचे में। गुड, जबरदस्त। कोई 1 फुट की छलांग लगा ली है मैंने। अब आप प्रोग्राम कंटिन्यू कर लें शिफा। दरअसल आपने छलांग लगाई नाजरीन। ये जो मुजाहिरा आपने देखा है ये विंग सूट कहलाता है और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में ये स्पोर्ट जो है ये मुतारिफ कराई जा रही है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के ज़ुमरे में ये आता है, एडवेंचर टूरिज्म के ज़ुमरे में ये आता है। और हमारे साथ मौजूद हैं एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान के बानी कासिम खान और उनके एक साथी हैं जो कि अमेरिका से आए हैं और एयर स्पोर्ट्स का मुजाहिरा करने वाले अमरीकी कैप्टन मैनिकॉर्न इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोनों यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और ये स्पीड फ्लाइंग करा चुके हैं और विंग सूट फ्लाइंग जो है वो इन्होंने करानी है। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या पाकिस्तान में इस चीज़ की पोटेंशियल है और जो हमारे यहाँ पहाड़ हैं, जो हिल्स हैं, क्या वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल एप्ट हैं कि यहाँ पर ये इस किस्म की फ्लाइंग हो सके। अब ऐसे आपको सूट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये सूट क्या है और कैसे काम करता है वगैरह वगैरह। बिल्कुल, मैं सूट का क्या बताऊं, ये भारी सूट है काफ़ी और इसके अंदर ये जो है विंग्स हैं इसके, इसको इस तरह पकड़ा जाता है और फिर उसके बाद छलांग लगाई जाती है जैसे मैंने आपको दिखाया और फिर उसके बाद उड़ते हैं। बाकी प्रोसेस आपको हमारे गेस्ट समझाएंगे। बस ठीक है, तो हम गेस्ट की तरफ आते हैं और अवैस आप अपना ये विंग सूट उतार के तमीज से आके अपनी कुर्सी पे बैठे और प्रोग्राम करें। आपको विंग फ्लाइंग हम कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, गुड मॉर्निंग। मैनिकॉर्न, कैप्टन अमेरिका, यू रिमाइंड मी ऑफ कैप्टन अमेरिका एक्चुअली। That's not a bad thing. That's a good thing. अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं, जरा एक्सप्लेन करें कि ये विंग स्पीड फ्लाइंग और विंग सूट ये दोनों दो अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है और ये किस तरह से होती हैं? बेसिकली अभी आपने देखा कि जो इन्होंने पहना हुआ है दैट्स विंग सूट। विंग सूट फ्लाइंग जो है ये हम पहाड़ों के ऊपर या कोई ऐसी एग्जिट्स ढूंढते हैं जहाँ पर हमारा 800 से 1000 की एक क्लिफ हो और हम उधर से जंप मारते हैं। जंप मारने के बाद फिर ये जो सूट है इसके एरोडायनामिक्स ऐसे होते हैं कि आप यू फील लाइक अ सुपरमैन और यू कैन कंट्रोल योर बॉडी। आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं राइट लेफ्ट और फिर आपके पीछे एक शूट होता है जो आप डिप्लॉय करते हैं और वो शूट जो है वो आप 800 या 1000 फुट ज़मीन से पहले आप डिप्लॉय कर देते हैं, यानी कि वो पैराशूट एक तरह से। बिल्कुल। सो दिस इज़ लाइक अ रॉकेट। ठीक है, और इसकी ट्रेनिंग भी तो होती होगी, जाहिर है अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, डायरेक्शन कैसे आपने सेट करनी है अपने, तो ये सारी चीजें भी तो करते होंगे। बिल्कुल, ट्रेनिंग तो होती है, मगर ट्रेनिंग के बगैर जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन है हम वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं 1.5 फुट की छलांग लगा सकते हैं। बिल्कुल, 1.5 फुट की छलांग लगा सकते हैं। अच्छा, और मैनिकॉर्न, so when did you arrive in Pakistan and did you specifically come for this sport? Yeah, I came here. It was a dream to climb some of the summits out here and do some wingsuiting. There wasn't a lot of information when I posted on my social networks asking my friends for advice on where to go in Pakistan. Zero responses. Nobody has been here that I know, so it was a dream. Qasim Khan invited us out to do a collaboration, a partnership to try to help pioneer wingsuiting and speed flying in Pakistan. We spent the last month driving from Islamabad to Skurdu to Husha to all the different remote villages, scouting, looking up, and like he says, teaching him a new way to look at the mountains. And we're hoping that we can inspire other adventure lovers to come out and follow in our footpaths and help push the sport a little further themselves. So far you have done the speed flying. We've done the speed. And what is speed flying?
Speed flying is it's a small canopy that's designed to go really fast down cliffs and down walls. It's like a paraglider is a very big canopy and it's designed for going up. Speed flying is a small canopy and it's designed for going very fast downhill, and you have some of the best terrain in the world that I've ever seen here. How dangerous is it? I mean, obviously, it looks very scary. The way you made it look, I would say it's fantastically easy. I think anybody should get it and try. No, look, so you have two of the most dangerous sports in the world. Wingsuiting is one of the most dangerous sports, and you also have 8,000 meter summits. So we're trying to find somewhere that's a little bit safer in the range of 5,000, 6,000 meter summits, using the locals, the porters, the climbers, using the communities and the villages to help show us trails and paths to the summits that maybe no other foreigner or tourist or even locals have ever been to, because it wasn't a value before. So we're trying a new type of pioneer to open up 5,000 footers, because you have 200 of them here that are jumpable, accessible year-round, that are beautiful. So that's what is jumpable a summit? I mean, it doesn't have to have some cliff. It has to have a cliff, obviously. Correct. But some obstacles in between. There should be no obstacles. It has to be clear. So you have two things. One, for speed flying, we can have the grade of the hill like this, and that's really nice, like a ski slope. Think of the same thing. A ski slope is the perfect terrain. For wingsuiting, we need more of a cliff like this, and it has to be about 150 to 160 meters of straight vertical drop, because it takes about 3 seconds to 4 seconds for our wingsuit to inflate with air before we start peeling away from the wall. The problem that we're having this time of the year is the snowfall is very low, and a lot of the summits that we wanted to do are at 15,500 500 meter mountains. So we spent the last 30 days scouting, and we have about 15 good wingsuit jumps, safe wingsuit jumps, that we're going to come back here for our project, our documentary, and start opening these up and hopefully bring wingsuiting to Pakistan as a major tourist attraction. So अब और मज़ीद आगे plans क्या हैं आपके? हमारे प्लान्स बेसिकली ये हैं कि ये एक ग्लोबल इंडस्ट्री है जिसको हम चाह रहे हैं पाकिस्तान में हम इंट्रोड्यूस करवाएं, बिकॉज जिस तरह इसने बताया अभी कि हम 5,000 6,000 वाली जो मीटर वाली पहाड़ी हैं उनको हम बिल्कुल भी देखते नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया। हम उनको अंडर सेल कर एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे, वेयरएज वो हमारे पास 200 से ज़्यादा 5 और 6,000 वाली पहाड़ है। हम जब भी सोचते हैं तो हम नहीं सोचते हैं 8,000 7,000 नागा पर्वत K2 और उससे नीचे से बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल असल में अब हमारे अगर आप देखें पिछले साल 1800 के करीब क्लाइंबर्स आए थे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक लैंडमार्क था। बट ये जो स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट में आप समझ लें अगर एक क्लाइंबर है तो उसकी जगह 100 विंग सूट फ्लायर्स होते हैं। आपसे गोल्स का पूछेंगे कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स को आप कहां तक पाकिस्तान में लेके जाना चाहते हैं, खास तौर पे ये विंग टारगेट क्या है? हाँ, स्पीड फ्लाइंग और विंग सूट के हवाले से। बेसिकली सबसे पहला तो हमारा टारगेट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर ये है कि हमने K2 से विंग सूट फ्लाइंग करनी है। मतलब K2 से छलांग लगानी है, आसान उर्दू तर्जुमा इसका ऊपर से छलांग लगानी है। अल्लाह रहम करे। गुड। It's going to be a landmark for Pakistan and for the whole the world as well, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस स्पोर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेसिकली हम इसको किया जाए और लोगों को हम इनवाइट करें। इसके अलावा जैसे उन्होंने बताया कि हम अभी पिछले 1 महीने से हम ढूंढ रहे हैं वो जगह जिनको हम एग्जिट पॉइंट्स बना सकें और हम वहाँ से अगले साल कोई फेस्टिवल करें और लोगों को बुलाएं इधर, और वो उनके डेडिकेटेड एग्जिट पॉइंट्स हों, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे पास इतने पहाड़ हैं जिसको हम अंडर सेल कर रहे हैं, और वो क्लाइंबर्स जो बेचारे पूरी सर्दियाँ कुछ नहीं करते, उनके लिए एक नया बेसिकली एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी हमारी इंडस्ट्री के अंदर। सो बेस्ट सीजन इसका कौन सा है करने के लिए? बेस्ट सीजन ऑफ कोर्स आई मीन समर से पहले, विंटर से पहले या बीच में है, मगर अभी जो सीज़न था अभी अनएक्सपेक्टेड वेदर चल रहा है, जैसा आपको पता है एक ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। मगर ये एक सेंस हमारे पास एक इक्विपमेंट है, हमारे पास टीम है एक ऐसी आई मीन इसकी 5 से 6,000 से ज़्यादा की इसकी जंप्स हैं, तो he is also going to be your trainer. Of course. I mean, he still is. How much time does it take for a person to get trained in this thing? Which sport? The wingsuit flying? 2 years. 2 years, okay. 2 years just to wingsuit, maybe. To base jump, I've been doing this for 9 years. Okay. I have 3,000 jumps. And what peaks have you chosen to jump from so far? From here? No, otherwise.
54 countries. I've jumped over a couple hundred times in different With peaks. this, What was the with most the help of dangerous this one? wingsuit. Yes. Which one was the most dangerous one? Which one is the most dangerous? Well, I would say Pakistan so far. Really? We've ran into the most obstacles, snow, ice. We've had to use climbing gear to get to the summits. We actually failed. We didn't Okay. make it. We had to turn back because it was getting dark, and we had to climb down an ice couloir, down glaciers in Hunza. So yeah, it's the first time I've ever been stopped. Finally, about the safety of this thing, because when you see people jumping off airplanes and having their parachutes and the parachutes don't open, it's deadly. Can this happen with this suit also? Absolutely. Don't even think of doing it, Awais. But you know, the biggest risk I see for you would be jumping off of that box. You Yes. have sustained the most injuries, you know, in here in the studio. Out there, where it's a really different vibe. It's relaxed. You know, when climbers come here, When you're in the air, it's relaxed. it's heaven. It's the closest you can get to flying. And human beings, we desire what we can't have, Yes. and flying is one of those things. And with a wingsuit, we come the closest to that feeling in the world. And the amount of work, dedication, teamwork that goes into jumping off of a mountain, it's a lifetime worth of goals to try to achieve. And it is a lifetime experience. I'm sure. Thank I'm you, sure. thank you both. Thank you. We thank both of you. You are, supporting these adventure tourism sports in Pakistan, and you're trying to promote them. Thank you for coming to Pakistan. Hope your stay is nice and comfy for you so far. And Acha. Yes, acha, acha. So this is the Acha. only word you've learned so far in Pakistan. No, I've learned a lot of words. Yeah. But don't put me on the spot right now. I guess. Inshallah. Inshallah, Thank you. inshallah. Thank you.